Welcome back to my channel. This video is related to breaking news. Sand announced the engineer trainee role. If you check here, engineer trainee 2 role is there, not one role. And one more thing, there is Genpact, the biggest hiring is announced. And if you want the free certificate of Tata company, there is 4 certification I am providing you. That is the virtual. You have to give the assessment because this is direct test opportunity, and you can easily take the Tata company MNC certification. So please watch video till end. In this video, if you are from 26, 25, 24, 23 batch, please watch video till end. This is there is one warning I want to give you, that please don't skip a second. First understand what I am telling you, then apply, because there is the one thing I want to tell you. First of all, go and check out this TCS interview application not got phase 1 not got एप्लीकेशन फॉर्म नॉट गो इंटरव्यू मेल फेज 1 नॉट गॉट मेल तो राउंड 1 का मेल नहीं आया, तो जाओ चेक आउट दिस वीडियो. दिस इज जस्ट वन वीडियो, ऑल डाउट विल बी क्लियर. सो बिगेस्ट हायरिंग इज अनाउंस्ड. इफ यू सी दैट दिस इज अ सैंड कंपनी, जूनियर फ्रेमवर्क इंजीनियर एंड जूनियर हार्डवेयर इंजीनियर्स. देयर इज 2 रोल एंड बोथ इज ट्रेनी रोल. फर्स्ट ऑफ ऑल वांट टू क्लियर दैट दिस इज 2 रोल, ऑल 2 रोल इज ट्रेनी रोल. दिस इज एब्सोल्युटली फॉर फ्रेशर 2026-2025 बैच. BE BTech electronical all branch instrument and related stream is eligible. Now the thing is strong interest in embedded system. What is embedded system? Just watch video till end. I want to tell you. So Chennai location is there. So there is a 2 link. Online registration is mandatory before the selection process. So if it means this is the direct shortlisting is there. Even if you did not, so you have to update your resume. First of all, I want to tell you both that this is the firmware engineer trainee, second one is embedded hardware trainees. So first I want to tell you about this, because here is not written anything like your domain वगैरह. So please watch it. So please till end. So please watch till end. This is embedded firmware engineer trainee. It means C++ is compulsory and C language is compulsory. So first of all, we are inviting application for this role. In interested candidates should register using the provided link. और यहाँ पे technical interview based on the eligibility criteria. It means after shortlisting there is direct technical interview. So यहाँ पे क्या मेहनत करनी है, सिर्फ shortlisting के लिए करनी है. अब यहाँ पे कुछ चीजें समझना है. यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना ये सिलेक्ट करना. सिंपल फॉर्म है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है. ओनली फ्रेशर इज एलिजिबल, बट यू हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम ChatGPT. गो टू ChatGPT, पुट दिस जॉब रोल जूनियर एम्बेडेड फर्मवेयर इंजीनियर ट्रेनी, और वहां पे जाके उससे बोलो कि मुझे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डोमेन आई वांट टू पुट इन रेज्यूमे, टेक्निकल स्किल आई वांट इंटरपर्सनल स्किल फॉर दिस रोल. दैट्स इट. जैसे ही वो देगा, पुट दैट बुलेट पॉइंट्स इन रेज्यूमे एंड अपडेट योर रेज्यूमे and put those domain resume, get the shortlisting mail. So this is for 25-26 framework. देखो डिफरेंट रोल है, दोनों में अप्लाई करना है, लेकिन ठीक है. तो ये है जूनियर एम्बेडेड हार्डवेयर ट्रेनी रोल. द रोल इज डिफरेंट आई नो, बट यू कैन इजिली अपडेट योर रेज्यूमे बिकॉज समहाउ सेम है. एम्बेडेड है मतलब C++ इज कंपल्सरी. सो इफ यू नो C++ then you can easily apply. There is already written shortlisted candidate for a interview, technical interview. There is no assessment. This is direct technical interview. There is no direct, there is shortlisting. After shortlisting there is no assessment, direct interview is there. ठीक है. On the eligibility criteria profile evaluation, तो eligibility criteria फॉलो करना जरूरी है, तो आधा काम वही में हो जाएगा. तो आधा काम तो वही हो जाएगा तुम्हारा शॉर्टलिस्टिंग का. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट बी अ फ्रेशर. ठीक है. एम्बेडेड टेक्नोलॉजी यू मस्ट टू पुट इन रेज्यूमे. ऑब्वियसली दे आर गिविंग already they are giving you training, but you have to get the shortlisting mail. So you have to put all embedded system related domains and keywords in resume and get the shortlisting mail. So this is the mass hiring. Go and check out this hiring, apply it as soon as possible. Now moving forward, Tata giving कटिंग एज टेक्नोलॉजी विच इज फ्यूचर रियलिस्टिक. ठीक है. जो कि बहुत ज्यादा डिमांड है, जिनकी उसका सर्टिफिकेशन दे रहा है. दिस इज द डायरेक्ट टेस्ट, वी कैन से डायरेक्ट कोर्स अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट असेसमेंट अपॉर्चुनिटी. फर्स्ट इज ESG, सेकंड इज डेटा विजुअलाइजेशन, GenAI पावर एनालिटिक्स, data analytics, basically cyber security analytics. So first I am clicking in this like GenAI. बस एक ही का बता रहा हूँ मैं, बाकी तुम उसी तरीके से फॉलो कर सकते हो. Start free simultation, you have to click on this and 3-4 hour self-paced complete work course, and you will see these learning in this course, and there is no grade, no assessment, only intermediate level of course is there. So you have to complete these things, pre-recorded video, earn a certification and put it in resume and LinkedIn. That's it. उसके बाद तुम्हारे को यहाँ पे बहुत वैल्यू मिलेगी. ठीक है. तो यहाँ पर देख सकते हो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 यू हैव टू कंप्लीट फिनिश लाइन. और ये सारे टास्क तुमको ऑलरेडी यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जाके सर्च कर लेना, आंसर मिल जाएंगे. तो फ्री ऑफ कॉस्ट है. GenAI पावर्ड एंड डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है. दिस इज द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू पुट दिस सर्टिफिकेशन रेज्यूमे, एंड देयर इज ऑलरेडी 4 कोर्स. ठीक है. So please do enroll in this and apply it as soon as possible. Don't skip a second. Don't
वेस्ट टाइम, जस्ट गो एंड कंप्लीट दिस सर्टिफिकेशन। और यहाँ पे जो टास्क है यू कैन इजिली फाइंड द आंसर फ्रॉम गूगल ऑल्सो और यूट्यूब ऑल्सो, ऑलरेडी देयर इज मल्टीपल वीडियोज you can easily check out. Now GANPAC just another big off-campus drive which is where is multiple roles. ठीक है, there is multiple role, data analytic, engineering, finance, graduate, HR, internship, leadership, more is there. Click on more. Here is many domain. You can easily apply. First update your resume and apply it as soon as possible. Education की level की बात की जाए, bachelor, master both is eligible. Major engineering, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, लॉ सारे एलिजिबल हैं एंड यू कैन इजिली गिव योर ग्रेजुएशन ईयर बिकॉज ओनली ग्रेड्स इज एलिजिबल. 25, 24, 23 बैचेस एलिजिबल. दिस इज बिग हायरिंग गोइंग ऑन, सो डोंट skip a second, don't miss this hiring. Just hit the apply button, but before that just read this area of interest in which you have knowledge or you have skill, then click on only that thing. Suppose I want a software engineer role, I will click on technology and IT. So please, as per your interest, click on that checkbox and apply it as soon as possible. Now the big hiring is announced, very big. Maverick Semiconductor hiring is announced only for fresher. 2025 batch pass out is eligible. Physical design engineer is the role. The role is physical design engineer, BTech, MTech, electronical, VLSI branches eligible. Bangalore location is there. These are the domain you have to put in resume. And first of all, keep in mind this is only for fresher, not for experienced candidate. You have to just submit your updated resume on this referral email ID and your subject line must be this and this. पता नहीं ये क्या लिखा है, तो इसको जितनी जल्दी हो सकता है सबमिट कर दो. एंड दिस इज द फिजिकल डिजाइन PD रोल. So complete it as soon as possible. And I already told you one direct test opportunity, we can say 4 roles is there, technical, and this is for big mass hiring for electrical engineering, and this is for all candidate like tech non-tech सभी के लिए बस यहाँ पे. So this is for all tech non-tech student, and this last opportunity is again for electronical branches. Don't worry कि यहाँ पे सिर्फ ये वाली tech के लिए थी और ये वाली tech के लिए. Don't worry, watch next video which I am uploading very soon. Just do subscribe my channel, like this video, and for direct test and multiple tech opportunity already uploaded multiple hiring for multiple batches degrees. If you did not watch yet about Infosys mass hiring, I don't know what are you doing. SCL internship is going on. Infosys tech role 22 up to 25 batches eligible. Superset mass hiring is ongoing. L&T, Coalition, MetLife, technical domain is there. So you have to just update your resume. Watch video. देखो सबसे पहले तो watch video till end. Understand the criteria. Understand the batches degrees which is not mentioned in the websites. After that I will tell you about in every video I already told you about the resume shortlisting, what to put in resume. That's it. उसके बाद अपना देख लो कि किस कंपनी में अप्लाई करना है, बस जाके लिंक पे क्लिक करो डिस्क्रिप्शन में जाके और अप्लाई करो ताकि शॉर्टलिस्टिंग भी हो, क्राइटेरिया भी समझ आए. But if you are blindly applying, going to the link in description box and just clicking on link and blindly applying, then you will never get to see anything. So please watch video till end, do subscribe my channel, like this video. Thanks for watching.